अस्सलाम वालेकुम। न्यूरो केयर में खुश आमदीद। यह हमारी स्ट्रोक या फालिज सीरीज़ की तीसरी और आखिरी वीडियो है, जिसमें हम आपको फालिज से बचने की एहतियात और अगर खुदा न खास्ता अगर किसी को फालिज हो जाए तो उसकी केयर कैसे करनी है और इसकी बहाली के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले बात हो जाए फालिज से बचाव की और एहतियात की। कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर तवज्जो देकर इस तबाहकुन मर्ज़ से बचा जा सकता है, और वो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू कर चुके हैं तो इसे बाकायदगी से खाएं और अपने डॉक्टर से बाकायदगी से मशवरा लेते रहें। इसी तरह शुगर को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो अपना वज़न कम करने की तरफ तवज्जो दें। तंबाकू नोशी से परहेज़ करें, क्योंकि ये स्ट्रोक या फालिज का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाएं और जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ना बढ़ने दें। बाकायदगी से वर्जिश करें, घी का इस्तेमाल कम करें और इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल करें। स्ट्रेस या टेंशन से बचें। और अगर खुदा न खास्ता किसी को फालिज हो जाए और इसको माजूरी हो जाए या इसका बोलचाल बंद हो जाए, तो उस सूरत में इसके साथ घर में रहने वालों पर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। फालिज का शिकार फ़र्द की केयर को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक, फालिज का शिकार होने के कुछ दिनों की केयर जिसको हम क्रिटिकल केयर कह सकते हैं, और दूसरी लंबे अरसे की देखभाल या लॉन्ग टर्म केयर। फौरी बाद की केयर में मरीज़ को घर में अगर वो मुंह से नहीं खा सकता तो एनजी ट्यूब या खुराक की नाली के ज़रिए बिठाकर लिक्विड डाइट देना, उसको हज़म करवाना, उसको अद्वियात वक्त पर खिलाना, उसकी हाइजीन का ख्याल रखना, हर 2 घंटे बाद इसकी करवट बदलना और इसकी कमर का मसाज करना, और साथ ही में इसके हर एक जोड़ की वर्जिश कम से कम 15 मिनट तक सारी वर्जिशें मिला के ये करना, ये इसमें शामिल है, ताकि इसकी कमर और कूल्हे पर ज़ख़म ना बने। अब आगे जो हम बात करेंगे वो फालिज के मरीज़ की देखभाल का लाजमी जुज़्व है, और वो है फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन या जिस्मानी बहाली। फ़िज़ियोथेरेपी के ज़रिए फालिज के मरीज़ की माजूरी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से ना पाकिस्तान में इसका रिवाज है और ना ही यहाँ अच्छे फ़िज़ियोथेरेपी सेंटर्स दस्तयाब हैं, ख़ासकर छोटे शहरों में। जिससे नुकसान ये हो रहा है कि फालिज का शिकार मरीज़ जो अच्छी फ़िज़ियोथेरेपी से बहुत बेहतर होकर अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, वो माजूरी का शिकार रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। Ça vous a donné envie de le bouger, et donc aujourd'hui il commence un petit peu à bouger beaucoup plus, à 17 jours de cet accident vasculaire. Relâchez, allez-y. Voilà. Relâchez, allez-y. Alors donc ça c'est le début des mouvements, donc début peut-être du stade 3, alors que nous étions Et vous reposez. au stade 2, il y a 2 jours. Voilà. Allez-y. Allez-y. Essayez de forcer, pliez les doigts aussi de l'autre côté, au moment où on forçait, fermez bien la main, remontez, remontez, et voilà donc la triple flexion qui commence à apparaître à partir d'une facilitation, à partir du trapèze supérieur. L'haltère, serrez bien l'haltère, remontez les 2 épaules. Et tu me disais que tout à l'heure, tu le sentais un petit peu à la main, le début de flexion, quand elle le faisait sur le dos aussi. Alors, autre facilitation, à partir de l'inclinaison latérale de la tête, composante sur laquelle elle a un excellent contrôle. Allez-y, on plie les doigts de l'autre côté, on plie le coude aussi de l'autre côté, pliez le coude aussi, forcez contre vous, voilà comme ça. Remontez, et voilà donc, là on voit apparaître un peu de triple flexion de l'autre côté. Voilà. On repart, on refait. Voilà, donc là ça apparaît beaucoup mieux encore. Début de triple flexion à partir de ces facilitations. Tendre le coude. Ah. C'est un mouvement essentiellement automatique, parce que c'est quand on fait ça, quand on la place, elle tient. Mais cette technique, tenir après avoir été mis en position sur le triceps. Voilà. Relâchez maintenant complètement le triceps, essayez de le relâcher complètement. Essayez de redescendre sans l'autre bras. Allez, essayez de pousser vers le bas le bras. Encore, encore, encore. Contractez la main de l'autre côté, serrez fort, pliez le coude. Donc, pliez contre vous le coude,
Essayez de descendre l'autre bras maintenant en même temps. Non. Le membre inférieur, elle a parfaitement récupéré, bien qu'on soit à 17 jours de l'accident initial. On redescend. Donc, pas de problème en l'air. Oui. La main sur le côté, comme si on voulait mettre le bras en croix. On tourne la paume de la main vers le haut, le plus possible. Dans l'autre sens maintenant, on tourne dans l'autre sens. On revient, on met la main à l'épaule du côté opposé. Très bien. La main sur la tête, évidemment. Pas de problème. La main le plus derrière possible. Très bien. On repose sur les genoux. On tourne la main dans un coude cette fois-ci. Là, il n'y a pas de problème. En tendant le coude, elle arrive à faire la pronation. Et dans l'autre sens, on arrive à faire la supination. Qu'à ce stade, on plie tenue. On peut demander au sujet de tendre, de monter la main. Et à ce moment-là, on voit que le phénomène de souk est encore plus fort. Et on ouvrez encore le plus que vous pouvez. L'extension simultanée du poignet et des doigts commence déjà à être possible avec cette facilitation. Tous les jours un petit progrès. Le progrès du jour, alors, c'est donc la flexion simultanée du poignet et des doigts. Donc ça, on n'y arrivait pas autrefois, à faire la flexion simultanée du poignet et des doigts. Et on fait dans l'autre sens, on remonte, ça par contre c'est facile. Comme si on accélérait en moto, là. Ici, voilà, ici. Donc ici, ça c'est facile. Par contre, dans l'autre sens, en gardant le poignet en flexion, on essaye de plier, en gardant les doigts en flexion, on essaye de plier le poignet. Donc le poignet et les doigts en flexion, avec étirement de ces muscles polyarticulaires. Donc voilà les exercices de préhension. D'objets plus ou moins volumineux. Et la préhension, je vais en prendre plusieurs à la fois, un seul pour l'instant. Voilà, très bien. On va prendre la partie en plastique. Voilà. Voilà le verre en plastique. Objet quand même. Voilà. Très bien. Après, très bien. On prend et on met. Ah. Donc, en essayant de rester assis. Voilà. Le trajet plus ou moins sinueux, c'est parti. Et on peut orienter, évidemment, sur coussin dans toutes les positions de l'espace, voire le mettre sur des zones plus hautes ou plus basses. Très bien. On essaye de mettre le paquet de mouchoirs. Ah. On ramasse au sol. C'est un exercice en soi. Voilà, et on essaie de le mettre en haut sur le mur. Il y est. Ah, il est retombé. L'escalier, parce que poser c'est une chose et jeter c'est encore une autre. Voilà, on les jette sur des marches de plus en plus hautes. On va la rechercher. Si possible avec la main, toujours. Très bien. On la remet peut-être avec l'autre bien dans la main pour qu'elle soit bien présentable. Et on la jette le plus haut possible. Voilà. Sur le côté de la table. Voilà, en mettant la main le plus à plat possible. Voilà, le coude bien tendu. On met le poids du corps vers l'avant. Voilà, ici. Pour avoir l'extension simultanée du poignet et des doigts
En passif, c'est une véritable traitement orthopédique d'ouverture de la main. Et on tourne maintenant, on met la main par-dessus l'autre et on tourne pour mettre le membre le plus en supination possible. Une fois que la main est en supination, après elle tient pratiquement seule. Voilà, et on peut tenir avec l'extension simultanée du poignet et des doigts la supination, parce que c'est un geste qu'elle n'arrive pas à faire en actif, mais elle arrive à le faire ici en semi-passif, en auto-passif, hein, dans sa position quadrupédique. Très bien à faire maintenant, c'est mettre la main au niveau du front. On y va, la main sur le front. Puis la main en arrière complètement, voilà, sans aucun problème. Elle met la main sur la tête. On redescend à l'épaule du côté opposé et on repose tranquillement sur le côté. Voilà, et on revient directement en arrière et on redescend sans problème de ce côté-là. Donc tout ce qui est sur le dos, on remet la main en l'air, on plie le coude, voilà, on le retend, on ouvre la main le plus possible, on tourne dans un sens et on tourne de l'autre, en pronation, supination le plus possible, mais ça c'est très difficile de tourner dans un sens et dans l'autre, ça c'est, elle a du mal. On revient.